Okay, now we are going to start with coordinate geometry. Now we have studied in standard 9th how to find the distance between the 2 points on a number line. Okay, today we are going to study how to find distance between 2 points on the xy plane, that is in the Cartesian, on the graph, that is. Okay, let us I'll give one example here. I took PS first. Distance PS. You see this distance. Now, how to find distance PS? We take the coordinate which is greater, and then we subtract the smaller coordinate from the greater coordinate. Here you can see coordinate of point S is 4, coordinate of point P is 1. So which is greater? 4 is greater than 1. So we write coordinate of S minus coordinate of P, that is 4 minus 1. So distance PS is 3 units. Now here we saw both the coordinates were positive. Now we go to two points where one is positive and other is negative. One is the positive coordinate. One point P has a positive coordinate and point X has a coordinate which is negative. How to find the distance here? Same way, we take the greater coordinate. The greater coordinate here is 1. 1 is greater than minus 4. Therefore, what we do? We do co-ordinate of P minus co-ordinate of X. So this will be coordinate of P is 1 minus of coordinate of X is minus 4. So it is 1 minus minus become plus, 4. So distance Px equal to 5 units. Now you saw just now I explained you how to find distance between 2 points on a number line. Okay. Now we are going to study. I'll explain you how to find distance between 2 points on the x and y plane. You have seen a graph. This is your xy plane. This is x dash, y dash. Okay. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5. This is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So just write down the numbers 2, 3, 4, 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Here it is 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Now I take 2 points. Okay, which is either parallel to, we'll see three way of getting the distance between 2 points. I am giving you case 1. Then we take case 2 also. Case 1 is if
seg AB is parallel x-axis. So let's consider this point. Suppose this A and this B. What is coordinate of point A? So coordinate of point A is 1, 2, and here it is 4, 2. Please carefully see. 1, 2, 4, 2. We want distance between AB. On the number line, there was only one coordinate. समझे ना, एक 1 या -4, 1 और 3 जो भी था. So it was simple, it was easy to add. यहाँ भी easy है, लेकिन समझना है आपको. यहाँ point A has two coordinates, one corresponding to x-axis, A, one corresponding to x-axis, and the other corresponding to y-axis. Here B, one coordinate corresponding to x-axis, which is 4, other corresponding to y-axis, that is 2. So how do we find distance AB? अभी distance AB कैसे find करेंगे? देखो, you should, I think तुम्हारे टीचर्स ने और तुमने पढ़ा भी होगा, you must have studied. What is the equation of x-axis and equation of y-axis? बताता हूँ. This is important note. Equation of x-axis is y equal to 0. Equation of y-axis is x equal to 0. आप बोलोगे ये क्या है? Equation of x-axis is y equal to 0. क्यों? ध्यान दो. This x-axis intersects y-axis in point O. ये तो आप जानते हो, दिख रहा है. Please see, अगर मैं यहां पॉइंट लेता हूं, यहां कोई पॉइंट लेता हूं, से P. So what is the coordinate of point P? 1, 0. यहां लेता हूं, ये समझो Q है. What is the coordinate of point Q? -3, 0. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? What I intend to tell you? Any point on x-axis, ध्यान से सुनो. Any point on x-axis will have its y coordinate 0. Y coordinate 0 होगा x-axis के ऊपर. And that is why equation of x-axis is y equal to 0. Same way, any point, कोई भी point लो यहाँ on y-axis, it will have its x coordinate 0. समझो मैंने यहाँ इसको s लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, -2. ये s. इसको मैंने r ले लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 5. So we can say all the coordinates, all the points on the y-axis will have x coordinate 0. And that's why equation of y-axis is x equal to 0. Okay? We have देखो. AB में it is parallel to x-axis. Since it is parallel to x-axis, its y coordinate is fixed. That is 2. कितना भी दूर जाओ, कितना ही पास आओ, उसका y coordinate will not decide the distance between the 2 points because it is parallel to x-axis. अगर x-axis से कोई segment parallel है, तो उसका y coordinate जो है will not decide the length of the segment. The length of the segment will be decided by x-axis. इसलिए यहां डिस्टेंस AB has to be, समझो इसको मैंने x1 y1 लिया और इसको x2 y2 लिया. So this will be x2 minus x1
will give me the distance between the 2 points. Therefore, distance AB will be 4 minus 1. So, distance AB will be 3 units. ध्यान से देखो, ये 3 units है. Okay? Case 1. If seg AB is parallel to x-axis, how to find the length? It will be the x coordinate will decide the distance, not the y. Note, since all points on seg AB parallel x-axis has its y coordinate constant. Since all points on seg AB parallel to x-axis has its y coordinate constant, therefore the length of seg AB or the distance AB will be determined by its x coordinates. By x coordinate of points A and B. इसको ध्यान से समझ लो. ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट केस पे. Case 2. If seg AB parallel y-axis. AB लेते नहीं हम लोग, x वाले mn लेते हैं. We take mn because we already taken AB. तो अभी यहाँ लिखते हैं. समझो यहाँ से ये पॉइंट M है और ये आपका पॉइंट समझो N है. What is the coordinate of M? नहीं, sorry. X एक्सिस पे 4 और Y पे -1. N का देखो, X एक्सिस पे 3 नहीं, X एक्सिस पे 3 है, 4 नहीं, ये 3. यहाँ भी X एक्सिस पे 3, Y पे -4. So distance Mn will be, इसको समझो हमने x1 y1 लिया, इसको x2 y2, then this will be y2 minus y1, क्योंकि ध्यान दो x1 और x2 इक्वल है, सेम ही है. तो यहां therefore distance Mn इक्वल टू -4 नहीं होगा, ये हमने गड़बड़ कर दी. ये स्मॉल, ये ग्रेटर वैल्यू है, -1 is greater than -4, therefore it is 1 -2. So -1 minus of -4, therefore distance Mn equal to 3. -1 plus 4, that is 3.
3 units. नोट लिखो. Same way, since all points on seg mn all points on segment M has its x coordinate constant. देखो यहां भी 3 है, यहां भी 3 x coordinate constant because mn is parallel to y axis. Therefore, the length of sec mn or distance mn, will be determined by y coordinates of m and n. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट केस 3. अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. समझो मैं आई टेक दिस ईयर, मैं ड्रॉ करता हूं पहले. मैं यहां लेता हूं पॉइंट. अभी कौन सा पॉइंट लें? एक्स एंड वाई तो नहीं ले सकते, एम एन हो गया. यू वी लेते हैं, यू वी लेते हैं. ध्यान दो, मैंने यहां लिया u. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -3, -1. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? v है -1, -4. प्लीज ध्यान से देखो, ये थर्ड केस वेरी इंटरेस्टिंग और यही आपको देगा डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ एक्स वाई प्लेन. ओके, u और v ये अलग अलग पॉइंट से कोई पैरेलल नहीं है, इसलिए कोई कोऑर्डिनेट सेम नहीं है. u और v का x कोऑर्डिनेट अलग अलग है, u और v के y कोऑर्डिनेट्स भी अलग अलग हैं. तो अभी इसको कैसे करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू ड्रॉ a line which is we draw a line passing through point O and parallel to y axis. पहले वो करो. तो चलो, then we draw a line which is passing through V and parallel to y axis. चलो करो. Suppose it intersect each other in point Z. तो Z के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ध्यान से देखो, Z के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये है -3 और ये है आपका -4. बराबर. अभी ध्यान दो केस. Remember, x and y axis are parallel to each other. Sorry, they are perpendicular to each other. So, ये line this line which is UZ, which is parallel to y axis, and VZ, which is parallel to x axis, will be perpendicular to each other. तो अभी यहां आएगा पाइथागोरस थ्योरम. Now, in triangle UZV, angle UZV equal to 90 degrees. Therefore, using Pythagoras theorem, you will get distance, और हम बोल सकते हैं uv square
इक्वल टू uz स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। आई वॉन्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसको मैं लेता हूं x1 y1 और इसको लेता हूं मैं x2 y2। मुझे uv चाहिए, बरोबर ना। इसको लेता हूं मैं x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब ध्यान से देखो uv क्या होगा, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। So uv, or we can say this as distance u comma v will be distance u comma z plus distance v comma z। चलो, मुझे uv चाहिए, तो ना uv हम डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स हैं और दो अलग अलग है, तो नहीं ले पाएंगे। तो हमें विथ रेफरेंस टू दिस लेना पड़ेगा। देखो क्या होगा, ये आएगा x3 माइनस x1 माइनस x3, ये ना, ये डिस्टेंस x1 माइनस x3 प्लस y1 माइनस y3। अगर आपको इजी देना है, समझना है, तो ये ना इसका x1, ये भी x1 ही होगा। देखो इसका सेम है, -3 -3, और ये देखो ये सेम है। सो ये y2 को मैं y लेता हूं, y। सो ये कैंसिल, ये निकल जाएगा देखो, और ये आएगा x6 गया, x माइनस ये बड़ा है, दिस माइनस दिस। ओके, और ये आएगा आपका x2 माइनस ये ना, हाँ x2 माइनस x1, x2 माइनस, मैंने x1 नहीं लिया है, मैंने ये x ही लिया है, बराबर ना। इसको मैंने x लिया, कॉमन है इसलिए, और ये y कॉमन है इसलिए xy, और ये आएगा x2 माइनस x1, और ये आएगा y माइनस y। ध्यान से देखो, ये चला गया, x माइनस x चला गया, ये माइनस, तो ये आएगा y1 माइनस y दो होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x दो होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस uv विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट लिया मैंने,
y माइनस y1, देखो स्क्वायर कर सकते हो, प्लस x माइनस x2 द होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जनरल फॉर्म बताता हूं मैं आपको, इसको ध्यान से देखो। ये देखो, जब ऐसे ये होगा तो ऐसे फाइंड करना है, ये होगा तो ऐसे फाइंड करना है, और ये होगा तो ऐसे फाइंड करना है। तो एग्जाम में ये ऐसे नहीं फाइंड करना है आपको, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। ओके, एग्जाम में कैसे फाइंड करना है, लेट्स प्रोसीड। मैं आपको यहां लिख के देता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला, ताकि आपको हमें अभी इसका इस्तेमाल करना है। वी आर गोइंग टू यूज दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। सपोज ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 आणि बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। सो डिस्टेंस ए बी will be square root of x1 माइनस x2 कोई भी ले लो चलेगा, प्लस y1 माइनस y2। आप अगर इसको x2 माइनस x1 लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसके बाद स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमें इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है टू गेट द आंसर। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ आवर questions. x2 minus x1, x1 minus x2, because we don't know which coordinate will be greater and which will be smaller. Chalo. Now we start with practice set. I have given you this formula. धीमे धीमे आगे जाएंगे तो we will evolve this, how to use and where and how can you determine the quadrilaterals, equilateral triangle based on this distance formula. वो मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। Let us start now. पहला है find the distance between each of the following pair of points. So question number 1 में in practice set 5-on-1 पहला पॉइंट है A and B. A is a 2,3 and B is 4,1. So सॉल्यूशन चालू करते हैं। इसमें हमें एज्यूम करना पड़ेगा, सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ A is x1 y1 वगैरह वगैरह। ओके, सपोज coordinates of A is x1 comma y1 and B is x2 comma y2. Therefore compare करो, x1 equal to 2, y1 equal to 3, x2 equal to 4, y2 equal to 1. Therefore distance AB क्या होगा, square root of x2 minus x1 में x1 I can take x1 minus x2 also या x2 minus x1, स्क्वायर टर्म है तो पॉजिटिव होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चाहे तो यहां लिख लो x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1,
4 minus 2. 1 minus 3. So this is, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या फर्क नहीं पड़ता है, टू हो, पॉजिटिव 2 हो या -2 हो, स्क्वायर के बाद तो पॉजिटिव होने वाला है, -2 the whole square. So this will be 4 plus 4, 2 into 4, 2 root 2 units, distance AB. यह है इसका आंसर. अब then go to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, उन्होंने दिया है PQ. PQ is P is -5, 7. P is -5, 7. And Q is -1, 3. So same way, solution. Suppose co-ordinates of P is x1, y1 and co-ordinates of Q is x2, y2. Therefore x1 क्या होगा, -5, y1 क्या होगा, 7, x2 क्या होगा, -1, y2 क्या है, 3. Therefore distance PQ will be square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. -1 minus plus हो जाएगा, 5 the whole square. y2 is 3 minus 7 the whole square. ये क्या होगा, 4 the whole square plus -4 the whole square. तो ये होगा 16 plus 16. So 2 times 16 है, तो इसको 2 into 16. This is 4 root 2 units. Distance PQ is 4 root 2 units. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. R is 0, -3. R is, ये क्वेश्चन है, 0, -3 and S is 0, 5/2. 0, 5/2. माइनस है या प्लस है? No, positive. Okay. Now, and solution. Suppose co-ordinates of R is x1, y1 and S is x2, y2. Therefore x1 क्या है, 0, y1 क्या है, -3, x2 क्या है, 0, y2 क्या है, 5/2. Therefore distance, you can look at the points and say these 2 points lie on, उसका देखो x coordinate 0 है तो lie on y axis. Distance RS equal to square root of x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square. So ये तो 0, 0 गया, 0 minus 0 the whole square plus ये आएगा y2 is 5/2 minus of minus, minus plus
3 स्क्वायर। तो ये तो चला गया स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम लो इसमें, ये 3 मीन्स 3/1, 3 मीन्स 3/1, सो 2 1s are 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 + 6, सो दिस विल बी, अच्छा ये स्क्वायर, तो ये होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो यही आएगा 11/2 द होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर चला गया तो आंसर इज 11/2 ओनली, सो डिस्टेंस RS इज 11/2, दैट इज 5.5 units. We go to next question, that is fourth question. इसके सब क्वेश्चन 4 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं और कौन से पॉइंट्स दिए हैं। ना आई इरेज दिस, आपको ये अच्छी तरह से समझ गया होगा क्या है। Point 4, L is 5, -8. -8, M होगा शायद, M is -7 -3, solution. Suppose coordinate of L is x1, y1 and M is x2, y2. Therefore क्या होगा, x1 will be 5, y1 will be -8 and x2, ये 2 है, x2 will be -7, y2 is -3. Therefore, distance LM will be square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. क्या होगा ये, -7 minus 5 the whole square plus -3, ये माइनस और ये माइनस, माइनस +8 स्क्वायर, तो ये आएगा -12 square plus 5 the whole square. So this is nothing but 144. 12 square is 144 plus 25. So square root of 169. Therefore distance LM, square root of 169 is 13 units. फिफ्थ क्या है, T -3 6 and R 9, -10. So suppose coordinate of T and coordinate of R, ये x1 y1, so -3 6 9 -2. Now we are interested in TR. So x2 is 9, minus of minus will be plus 3 square plus y square is -10 -6. This minus and plus is plus. 9 plus 3 is 12 square plus -16 square.
12 12 144 प्लस 256, ये आता है 420. So distance T comma R is 20 units. So fifth also completed. Now we are going for the sixth question. Sixth question, W कितना है? -7/2, 4, और ये x है. X is 11, 4. Coordinate of W, coordinate of x. x1 क्या है? -7/2. y1 is 4. x2 is 11. y2 is again 4. Now here we are interested in distance w comma x. So x2 minus x1, 11 minus 7/2 the whole square plus 4 minus 4 the whole square. 4 minus 4 is 0, वो चला गया. 0 स्क्वायर इसका कोई मतलब नहीं है. ये आता है देखो 11/1 minus 7/2 का स्क्वायर. तो एलसीएम लो, 2 1s are 2. Now 2 into 11, 22. एक गड़बड़ की हमने. x2 is 11, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये. So 22 plus 7, देखो 2 11s are 22, 1 7s are 7. तो यह आएगा अपना 29/2 स्क्वायर. तो रूट एंड स्क्वायर कैंसल आउट. सो क्या मिलेगा ये? 29/2, that is 14.5. Therefore distance wx equal to 14.5 units. So we completed all the 6 questions of question number 1. Question number 1 अपना हो गया. Practice set. Now we have to show that these points, 3 points are collinear. इसका मतलब देखो, we have to prove simply distance AC equal to distance AB plus distance BC. Any 2 sides, कोई भी 2 segments, 2 distances equal to the third, we have to prove. Then all the 3 will be collinear. You can say all the 3 are collinear. So now let us start. Question number 2 का first. A is 1, minus 3. B is 2, minus 5. C is minus 4, 7. So now let us start. Suppose ये solution ही है. I am taking solution only. Suppose डायरेक्ट लेने क्यों है? लेंदी हो जाएगा, 2-3 मार्क का ही होगा. चलो डिस्टेंस सीधा. डिस्टेंस ए बी लो पहले. स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1, so it will be 2 minus 1 square plus ये -5 minus plus 3 square. So this will be how much? 1 square plus -2 square. तो ये कितना होगा? 1 plus 4
Therefore, distance AB is root 5 units. This is first. Now go to distance BC. This x2 minus x1. ये x2 समझो, इसको x1 समझो. -4 -2 square plus y2 is 7 minus plus 5 square. So ये -6 the whole square plus 12 square. तो ये कितना होता है? 6 square. नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही है. So this will be 36 plus 144. This is 180. So nothing but ये 36 into 5. So ये आएगा आपका 6 root 5 units. ये है डिस्टेंस आपका B, C. This is your second equation. With third A or C. Distance A, C is equal square root of. ये इसको x2 लो, x1 y1 x2 y2. ये पहले -4 -1 plus 7 minus plus 3. तो ये क्या होता है? -5 square plus 10 square. So this will be square root of 25 plus 100. तो आता है आपका 125, which can be written as 25 into 5. So distance AC क्या होगा? 25 का स्क्वायर रूट 5 root 5 units. Please see from 1, 2 and 3. ये है 5 root 5 plus 1 root 5 करोगे तो 6 root 5 आएगा. So this plus this is this. Sorry, this plus this is this one. This plus this. AB plus AC. तो लिखो, since distance AB plus distance AC equal to distance BC. From 1, 2 and 3. We get this. Therefore, points A, B and C are co-ordinate. We are not going to find betweenness. कौन सा पॉइंट किसके बीच में है नहीं चाहिए. हमें सिर्फ देखना है sum of 2 is equal to third one. कोलिनियर पॉइंट्स. नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. चलो, go for next question. Solution 2. पॉइंट्स कितना दिए हैं? पॉइंट्स इज L -2 3 M 1, -3 N 5, 4. सो पहले LM लेते हैं.
We take first Ln x2 minus x1. So 1 minus minus plus 2 square plus minus 3 square. ये minus 3 and this minus 3. तो ये आएगा 3 square plus minus 6 square. 3 square is 9 plus 36. कितना आ गई? 45. तो ये आएगा 9 into 5. This will be 3 root 5. So ये हम लोग यहाँ सीधा लिख सकते हैं. So distance Lm is 3 root 5. अब आते हैं डिस्टेंस Mn. ये और ये, इसको x2, इसको x1. So 5 minus 1 the whole square plus 4 minus minus plus 3 the whole square. तो ये आएगा 4 square plus 7 square. 4 4 कितना आता है? 16 plus 49. So 65 आता है. Keep this as it is. कोई फैक्टर्स नहीं आ रहे इसके. Distance Mn. Now we go to distance. ये 2 है. Distance Ln square root of 5 minus minus plus 2 square plus 4 minus 3 square. क्या आएगा ये? 7 square plus 1 square. तो ये आता है 49 plus 1 root 50. This can be written as 25 into 2, that is 5 root 2. So distance Ln is 5 root 2 units. ये देखो, ये रूट 5 है, ये फैक्टर से ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर, लेकिन ये ऐड नहीं हो पाते. सो दे आर नॉट इक्वल. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 1, 2 and 3 डिस्टेंस हम Mn लेते हैं. डिस्टेंस Mn not equal to distance Ln plus distance Ln. Therefore points M, L and N are L, M and N are not collinear. So next question number 3. First 2 हो गया. Now we go to third question. Third and fourth.
R is 0, 3, B is 2, 1, S is 3, -1. चलो, therefore distance RD फाइंड करते हैं पहले. This and this. ये क्या होगा? x2 minus x1. So it will be 2 minus 0 square plus y2 minus y1. 1 minus 3 square. तो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. तो ये आएगा 4 plus 4. ये आएगा 2 into 4. That is 2 root 2 units. Therefore distance ds कितना है? x2 minus x1. ये 3 minus 2 square plus -1 minus 1 square. y2 minus y1, that is. This is 1 square plus -2 square. So this is 1 plus 4 root 5 units. Distance r comma d. ये distance d comma s है. Root 5 units. Distance RS over 3. ये 3 minus 0 square plus -1 minus 3 square. ये कितना होता है? 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर. तो ये कितना होगा? 9 plus 16 root 25. This will be 5. ना देखो, ये भी अनइक्वल है. Since ये लेते हैं, since distance r comma s not equal to distance r comma d plus distance d comma s, therefore points R, comma D and S are not wholly near. From now go to fourth question. ये हो गया. Fourth question. Solution 4. P कितना दिया है? -2, 3. Q is given to as 1, 2. R is given to as 4, 1. Therefore distance PQ कितना होगा? Square root of ये x1 ये x2 है. So 1 minus 1 minus of minus is plus. So 1 plus 2 square plus y2 minus y1 2 minus 3 square. तो ये कितना होता है? 2 plus 1 3 square plus minus 1 square, that is 9 plus 1. Therefore distance PQ is root 10 units. Therefore now आप बताएं distance RQ, QR. Distance QR equal to x2 और ये x1. So x1 y1, x2 y2. So x2 minus x1, 4 minus 1 square plus y2 minus y1, 1 minus 2 square.
तो यह आएगा आपका 3 स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, तो ये भी होगा 9 प्लस 1. सो डिस्टेंस QR इक्वल टू रूट 10 units. So this is 1, this is 2. अभी नेक्स्ट देते हैं. Therefore distance PQ हो गया, QR हो गया, PR, distance PR. ये x1, y1, x2, y2. So x2 minus x1. So it is 4 minus minus plus 2 square plus 1 minus 3. तो यह आएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. सो दिस विल बी 36 प्लस 4. दिस विल बी 40. दिस कैन बी written as 4 into 10. This is 2 root 10 units. यह है डिस्टेंस P, R. यह स्टेटमेंट नंबर 3. From 1, 2 and 3 what we conclude? Distance PQ plus distance QR equal to distance PR. From 1, 2 and 3 we get distance QR, no, distance PQ पहले, distance PQ plus distance QR equal to distance PR. Therefore points P, Q and R are collinear. हो गया. तो अभी क्वेश्चन 3 पे जाते हैं. थोड़ा इंक भर लेते हैं. देन विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3. तब तक क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, रीड तब तक आप लोग. Question number 3. उन्होंने दिया है अपने को find the points, so find the point on x-axis. ध्यान रखो, now find the point on x-axis which is equidistant from A, that is -3, 4 and B is 1 and -4. So solution, A का कोऑर्डिनेट क्या है भाई? 3 and 4, -3 and 4. And B is 1 and -4. They say there is a point on x-axis which is equidistant from A and B. So हम assume करते हैं, point का नाम नहीं दिया है तो हम assume करते हैं let P be the point
on x-axis and equidistant from points A and B. ये हमने सपोज कर लिया, एज्यूम कर लिया. ओके, अभी याद रखो मैंने आपको कहा था any point on x-axis will have its y coordinate 0 and any point on y-axis will have its x coordinate 0 starting. तो लिखो since point P lies on x-axis, its y coordinate will be 0. Therefore, Px, 0 ये हमने ले लिया. ओके, अभी हमें therefore Px, 0 therefore coordinates लिखो ना, therefore coordinates of point P is x, 0 from given PA equal to PB. This P is equidistant from A and B, so PA will be equal to PB from given. तो सब्स्टिट्यूट करो अभी इसके अंदर. P की वैल्यू मालूम है, ये मालूम है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस y2 minus y1, तो 0 minus 4. x minus 1, 0 plus 4. तो ये क्या होगा आपका, स्क्वायरिंग नहीं, स्क्वायरिंग बाद में करेंगे. x plus 3 square plus minus 4 square equal to x minus 1 square plus 4 square. Squaring both sides करेंगे तो दोनों का स्क्वायर रूट निकल जाएगा. So we get x plus 3 the whole square plus 16 equal to x minus 1 the whole square plus 16. देखो अब ये 16 निकाल दो. So subtracting 16 from both sides, तो क्या बचा, x plus 3 the whole square equal to x minus 1. स्क्वायर ले सकते हो तुम, लेकिन मत लो, ये लो, एक्सपेंड करो, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. ए फॉर्मूला इस्तेमाल किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो x का स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3x इंटू 2 6x और ये हमें 3 का स्क्वायर. सेम वे ये x का स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज 2 इंटू एक्स इंटू 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 इज x इंटू 2, सो 2x प्लस 1. सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग, नहीं तो सीधा इसका लेके आओ, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x इक्वल टू 1 minus 9, ये चला गया. So we get 8x equal to minus 8. Therefore x equal to minus 8 divided by 8. X equal to minus 1. Therefore coordinates of point
P is -1, 0। क्या उन्होंने पूछा है? फाइंड द पॉइंट। ये फाइंड किया। आंसर, therefore point P -1, 0 lies on x-axis and is equidistant from point A and B. चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। Verify the points. Verify that points P -2, 2, Q 2, 2 and R 2, 7 are vertices of a right angled triangle. चलो वेरीफाई करते हैं। लिख लो पहले। ये क्वेश्चन 4 है। सोल्यूशन ए की P है, नो P -2, 2 Q। हमेशा टेक्स्ट बुक अपने पास रखो। 2, 2 सामने मतलब, एंड R 2, 7 are the vertices of a right angle triangle। देखो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो हमें पाइथागोरस इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम। तो देखते हैं, पहले तीनों साइड्स निकालते हैं। पहले निकालेंगे हम लोग फाइंड PQ, देन फाइंड QR, देन फाइंड PR, मतलब डिस्टेंसेस। चलो, therefore what is distance PQ? x2 minus x1, so 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 - 2, ये क्या होगा? 4 स्क्वायर प्लस 0, कोई मतलब नहीं है। 2 - 2, so this is 2 और √2 चला गया तो 4। therefore distance P, Q equal to 4 units। Question number 1। now distance QR फाइंड करते हैं। QR x2 x1, 2 - 2 square, 7 - 2 square। 2 - 2 is 0, उसको भूल जाओ। इसको 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 5 ओनली, बिकॉज √2 और स्क्वायर रूट चला गया, तो ये 5 यूनिट्स किसका है? ये डिस्टेंस QR। therefore डिस्टेंस अभी PR, वो 3 आना चाहिए। इट विल बी 3, देन ओनली वी आर राइट। PR पाइथागोरस होगा ये दिस माइनस दिस, so 2 + 2 square plus y3 minus y, so 7 - 2 square। यह आएगा 4 स्क्वायर प्लस यह आएगा 5 स्क्वायर, 16 + 25। कुछ तो गड़बड़ हुआ है।
this minus this, बराबर है 25 plus 16, 41. 41. So distance PR for root 41 units. चलो स्टार्ट करते हैं. What is distance PQ square? Distance PQ square will be 4 square equal to 60. इसको 1 लेते हैं. Now go for distance QR square. Pi का square so distance QR is 25 V2. Now go for next third. Therefore distance PR, P and R, root 41 square. So distance PR square is simply 41. From 1, 2 and 3. 16 plus 25 equal to 41. Therefore distance PQ square plus distance QR square equal to distance PR square. That is PQ square plus QR square equal to PR square. Therefore, using converse of Pythagoras theorem, triangle, we can say that points P, Q and R are vertices of right angled Now we go to question number 6. नहीं, question number 5. 6 इतना घाई क्या है? Question number 5 first, and then question number 6. See, in question number 5, they say show that points ये आपका P, ये सॉल्यूशन लेते हैं सीधा 2, -2 Q 7, 3 R 11, -1 and S 6,6. -6. This comma -6 are the vertices of parallelogram. बताना है, we have to show that they are the vertices of a parallelogram. देखो
क्वाड्रिलेटरल जब हम लिखते हैं ना, हम बहुत पहले किया था 8th में, याद है? सो आइदर वी राइट इट क्लॉकवाइज और वी राइट इज एंटी क्लॉकवाइज। मैं अभी आपको बता रहा हूं तो उल्टा होगा, आपके हाथ से वो ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, सो ये PQRS कैसे भी लो, PQ ये ऐसा होगा कुछ, रफ फिंगर आपको बता रहा हूं, PQRS। We have to simply show PQ equal to SR and PS equal to QR. If we find this, we conclude that quadrilateral is a parallelogram. तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते डायरेक्टली, ये दिया हुआ है गिवन, therefore find distance PQ, square root of 7 minus 2 square plus 3 minus of minus plus 3 plus 2 square, तो ये होगा 5 square plus 5 square, 25 plus 25, this will be root 50। रूट 50 कितना होता है? 5 रूट 2। इसको मैं इजी लिखता हूं 25 इंटू 2 से, आपको पता चलेगा। ये यूनिट्स, ये आपका डिस्टेंस P, Q। No, distance PQ can be written as PQ also. So next चालू करते हैं। Therefore distance now QR, 11 minus 7 square plus minus 1 minus 3 square, minus 1 minus 3 square, ये कितना आता है? 11 minus 3 is 4 square plus minus 4 square, तो ये आता है आपका 16 plus 16, तो ये आता है 16 into 2। So distance QR equal to 4 root 2 units। तो अपने को क्या मिला है? PQ is 5 root 2 and QR is 4 root 2, ये हमें मिला है। So we go to one, two. Therefore now distance next, SR। SR, तो ये स्टार्ट करो पहले, वैसे कैसे कुछ भी चलेगा। 6 minus 11 ऐसा किया तो भी चलेगा, नो इशू, बस आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। -6 plus 1, ये +1 क्यों इससे? -6 एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये आता है 25 plus 25। देखो 25 into 2, therefore distance SR is 5 root 2 units। तो ये भी 5 root 2 हो गया। देखो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, therefore distance PS now 6 minus 2 square plus -6 plus 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 plus 2 square, 4 square plus -4 square, 16 plus 16, 16 into 2, 4 root 2 units। यहां से यहां
Therefore, distance PS equal to 4 root 2. ये अपना थर्ड और ये है फोर्थ. Therefore, from 1, 2, 1 and 3, from 1 and 3, we get PQ, distance PQ equal to distance SR, that is PQ equal to SR. From 2 and 4, we get QR, distance QR equal to distance PS, that is QR equal to PS. Since opposite sides of quadrilateral PQRS are congruent, therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram. Now we are in practice set 5.1, question number 6. They have given us A, B, C, D. These are the coordinates of A. 4, -1, -7, -4, -7. B coordinates of B is -1, 2. Coordinate of C is 8 and 5. Coordinate of D is 5 and -2. They have asked you to show that this quadrilateral ABCD is a rhombus. For rhombus, we have to show all sides are equal. That means we have to show AB equal to BC equal to CD equal to AD. If you do this, you can say quadrilateral ABCD is a rhombus. Let's start. Distance AB equal to AB equal to distance AB equal to square root of x2 minus x1. So -1 minus plus 4 the whole square plus 2 minus plus 7 square. So this will be 3 square plus 9 square. 9 plus 81. This is 90. 9 into 10. Therefore, AB is equal to 3 root 10 units. Now we go to BC. What is BC? It is distance B comma C. Square root of. इसको x1 y1 x2 y2. So x2 minus x1. So it will be 8 minus minus plus हो जाता है 5 minus 2. So this is 9 square plus 3 square. Something. 81 plus 9 is equal to 90. So this will be square root of 9 into 10. Therefore, BC is equal to 3 root 10 units. This is your second,
थर्ड देखो सी is equal to distance CD. अब इसको x1 y1 x2 y2 so x2 minus x2 so 5 minus 8 square plus minus 4 minus 7 so minus 4 minus 1 minus 3 square plus minus 9 square 9 plus 81 9 into 10 90 therefore what is CD? CD is 3 root 10 units. This is your question 3. Now go to AD. AD is distance A comma B. A and D. So this will be x1 y1, x2 y2. So now x2 minus x1. So 5. This is minus plus 4. Plus minus 5. Minus 4, sorry. Minus 4. And this is minus plus 7. ये क्या हो गया 9 square plus 3 square. This is again 81 plus 9 90 that is 9 into therefore AD is equal to 3 root 10 units. Now this is units अंदर देखो ये आ गया आपका fourth. So from 1 2 3 4 what we can do? From 1 2 3 and 4 we get AB equal to BC equal to CD equal to AD. Therefore, all sides of quadrilateral AB CD is all sides are equal. Therefore, by definition of rhombus, quadrilateral ABCD are complete question number 6. अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. Find x if the distance between L, find the value of x. Keep the textbook in front of you, so it helps. Find the value of x, just find x if the distance between L, that is x comma 7, and M 1 comma 15.
distance ln, they are given us. If the distance between 2 points ln and is 10, you can find x. Therefore, distance ln, use distance formula. There is x1 y1 x2 y2. So this will be 1 minus x square plus 15 minus 7 square. Now distance dm is 10. 10 equal to 1 minus x square. This will be 8 square. We want to remove the square root. So squaring both sides. What we get? Therefore we get 100 equal to, ये square root निकल गया. We get 1 minus x the whole square plus 64. 64 को इस साइड लेके. So 100 minus 64 will be, इसको expand करो, ये याद रखो ये होगा a square, sorry, a minus b the whole square. तो ये क्या होगा? A square minus 2ab plus b square. So 1 minus x का एक्सपेंशन क्या है? a को 1 समझो और b को x समझो. So ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ है, ये माइनस माइनस ये भी माइनस, तो माइनस 2. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ दिस x into 1 is x प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर. So उसको रिवर्स में लिखो. You can write this like this also. X square minus 2x plus a. So we get x square minus 2x plus 1. Therefore this is 36 equal to x square minus 2x plus 1. This side लगेगा. So it will be 35 equal to x square minus 2x. 1 उस साइड लगेगा. Side changes, sign changes. मैं इसको घुमा दूँ. x square minus 2x 35 होगा इक्वल टू 35 घुमा देंगे. अब 35 को इस साइड लेके आता हूँ. माइनस 35. See, product is minus 35 and sum is minus 2. तो ये आएगा 7 into 5. So minus 7 plus 5. ये factors हैं. These are factors. So let's put that factors here. X square minus 7x plus 5x minus 35 equal to 0. Therefore x common निकालो इन दोनों में से. What do we get? X minus 7. इन दोनों में 5 common है. So x minus 7. Look at this. Same bracket. Then we are right. Therefore we get x minus 7 into x plus 5 equal to 0. Therefore x minus 7 equal to 0 or x plus 5 equal to 0. Therefore x is equal to 7 or x is equal to minus, the coordinates हमें लिखे हैं. So ये दोनों पॉसिबल हैं in this case. Therefore answer coordinates of point L are 7,7 और मैंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x ना, तो वही लिखा. Therefore value of x is 7 or minus 5.
Question number 8. Show that जो इरेज करना बाकी है. Question number 8. They have given us points A, B, C, D. You have to show that triangle is equilateral. If you want to show triangle equilateral, that means all the distances between the three vertices will be equal. So, देखो triangles. Solution 8. उन्हें दिया A 1,2, B 1,6, C, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 + 2√3, 4. Show that triangle is equilateral. इसका मतलब we have to show AB equal to BC equal to AC. If you prove this, triangles are equilateral. So let's start. अच्छा क्वेश्चन है, important. Because of this, this is important because of this x coordinate of C. अच्छा question. Now this I take x1 y1 x2 y2. So this x2 minus x1. So this is 1 minus 1 the whole square. 6 minus 2. So ये होगा 0 minus ये 4 square. 4. So AB equals to distance AB equal to 4 units. Therefore AB equal. First, अभी BC. Distance B comma C. x1 y1 x2 y2. So x2 minus x1. So this value 1 plus 2√3 minus 1 plus s square of this 4 minus 6. ये होगा 1 minus 1 चला गया 2 2 2s are 4. So 4 3s are 12 plus डायरेक्ट मत करो. Now 4 3s are 12 plus 4. This is nothing but √16. So what will be distance BC? BC will be 4 units. ये अपना इक्वेशन. अब आते हैं AC. AC is distance comma C. AC. Same way x1 y1 x2 y2. So this will be 1 plus 2√3 minus 1 the whole square plus 4 minus 2. ये क्या होगा, ये चला गया. So this will be 2√3 square plus 2 square. ये आता है 12 plus 4 equal to √16. Same like this.
So AC is equal to 4 units. We देखो from 1, 2 and 3 what we conclude? All sides are equal. Cease. Therefore, from 1, 2 and 3 we get AB equal to BC equal to AC. Therefore, by definition of equilateral triangle ABC is equilateral. So with that, exercise 5.1 complete. Let's practice set 5.1 complete. Now we are going to go to practice set 5.2. Now before we actually go to practice set 5.2, let's explain to you some